Okay, so hello, all, and we are back today with the same project that we started yesterday, which is a rate limiter project, and it is something very nice, something very good that we are trying to build over here. And yesterday we decided what kind of things, what kind of setup that we need, and I was explaining you. No, this is PewDiePie's video. Yeah, this is where I was explaining you all guys. I gave you the basic overview what I'm trying to build over here, right? This is a simple API gateway that I am trying to build, and what all things that I'm gonna be building in this one. Okay, so I don't think I think people are very interested. Yesterday, today, I'll start to finish. I'll finish this today. There will be no issue as such, and let me start the music because you guys are very boring. Let me start the music. Okay, let me explain this to myself now. uh, is it not working? I didn't connect to my शिवर्ती चर्चा boring साले. Okay, so I have decided to use this bucket logic as I told you yesterday. uh, so let me okay, this is better. uh, Let me explain you guys what kind of a logic I'm trying to use here. So here it will be a token bucket. Okay, this is what we are gonna build today. So this is token bucket. Okay, so we'll be building token bucket. Here two things will be there. One is token capacity, and other thing will be tokens per minute. We have, yeah, refill rate per second. Okay, and another thing will be uh, refill rate per second. These two things will be there. So there will be always how many number of tokens will be there. So there will be max these tokens, and for every second there will be a token added. So 1 second, one token. Okay, for example, there are 5 seconds elapsed, so five new tokens will be added to this. So that this is how it will be used. Okay, and there is, like, suppose for example there is for example we have this. Okay, the outlet. So the outlet is like this. We And here are the token 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So per request we will use one token. So there are a few methods that we will need in this one. डॉल्फीवाल्या बोलावा माझ्या डीजेला डॉल्फीवाला.
Uh, so there will be a few methods that we will need in this token bucket. So token bucket right now will be a class for us. So the class that we created yesterday, it is not completely done. So token bucket, it is the algorithm that we are using for this. Here some things that we need is like int capacity, as I mentioned over here. Int capacity will take. Okay. Then there are. Hi, how are you? I'm good, bro. Yash, how are you? How are you, bro? Then refill. Oh, sorry. I'm good, bro. I started in hurry today. Then there is this. Just a second. Yeah. Then there is this refill rate per second that we need. So uh, refill rate per second that we need. So it will be like double. Okay. And we'll have constructor and all these things. I'm not going to write. I'll write the methods that we will need. The first method that we will need is the refill method. Okay, so in this refill method we have to keep filling this bucket when an whenever there are shortage, whenever there is a shortage, but we can't let this method run in the background forever because it will be a very inefficient way to do so. Okay, so what could be the better way over here? So we have to check like if the token has been used from this current bucket, then only we will add. This could be one condition. There could be like another conditions as well. You said good. Yeah, yeah, good, good. uh, what I thought about it, I was like reading about it. So first, actually we need to find out how much time has been elapsed since the request. For example, the timer starts at 00. Okay, and how many tokens will be right now? Initially 10 tokens. Okay, time, tokens, and then request comes. Okay, request, currently there are 0 requests. Okay, but at like 1 second, I'll write it very simply, not like this. Aajana meri okay, so I'll say 0 second यहाँ पे, and then first second. Okay, how many tokens will be there? 10. But now the one request come. Okay. So how many tokens will be left? 9 tokens. So 2 second pay, there will be 9 tokens left, but no request is there, so we are not gonna fill this. But then again one request comes at third second. Okay, so at third second a request comes, so then we have to evaluate again the number of tokens that we have in the bucket. Okay, because we are not running this in the background, so whenever the request comes, then only we are gonna calculate the number of tokens that these are the tokens, number of tokens that will be present in this one. So it has a maximum capacity. Okay, currently we are marking it as 10. 10 is the standard maximum capacity. And now we have to think about how this, just a second, let me reduce the volume, it's disturbing me while talking. Yeah. Now we have to think about how we'll calculate the current number of tokens. So when was the first request was met? It is at second one. And what's the current timer? It's 3. So total elapsed time is 2 seconds. So since the last request, 2 seconds has been elapsed. So per second, a new token should be added. So ideally, how many tokens should be added? Earlier 9, so now 2. So 9 plus 2, one token should be present. But there is a maximum capacity of 10. So we have to like use, it is a very common sense that we have to use math mean. So we have to take up among capacity and this what we take, elapsed time into token per second, like refill rate per second. Okay, so I'll rate I'll write refill uh, rate per second. Okay, so among this 10 will be less, so at the third second again 10 tokens will be there, and from these 10 tokens one token will be used, so that our bucket will always be
full within because we are still within the limit. If 10 requests came in 1 second and all of those are been used, then there are like zero tokens left, and the next second uh, one a new request comes, we will say okay, it's 429, the request blocked. Okay, I hope this is what this book has given us as well, and this is what we are implementing. Uh, I'll show you my. Oh, sorry, I missed your text, bro. I'll show you my typing site in an hour. There are some bugs, but I'll try to fix them as soon as I can. I need to add a few buttons for the result screen. Yeah, yeah, yeah. Sure, bro. Sure, sure. I really like to see what the community is doing over here, and I like to share the work. So I'll definitely see. Please do share the link. I don't think you could be able to share the link in this chat, so you have to share anywhere on my LinkedIn, Insta, or Discord, whatever is okay for you. Okay, so this is the refill method. So let's think about the code, like what all things that we uh, thought about this over here. So let me erase this first. Let me write it newly. Okay, so first and foremost, what would be the return type of this refill? So we are not getting anything out of it, so return type would be void. So void refill, and in this one, first we need to check the current time because we are checking the time 0, 1, 2, 3. So we need to know what is now. So now it's simply what is there in Java. कि Java में हम कैसे करते? There is something like system dot current. How to check how to check current time in Java? It is system dot something. Uh, Local time. I want seconds only. I want milliseconds only. Okay, not seconds. We'll take it in milliseconds. So we need yeah, system dot current time millis. This is what we want. So array, I didn't post the today's link of this in the Discord, so that's why nobody joined. So let me share it over here. Okay, and over here. So am I missing out on the tech chats? Random irrelevant question. Do you have a pet animal? Yeah, I do have a cat. I do have a cat, but she doesn't like to stay within the house, so she roams in a building, comes for food, again goes. So I think I am his pet animal. So now was like system system dot current क्या था current time in current time minutes. So current time millis. Okay, and we need to calculate this now elapsed time. So let me take int elapsed time is equal to this now minus what? We need to have the last timestamp. Okay, we have a taken last timestamp. Yeah, last refill timestamp is what we need. So we need to always update this. So last uh, timestamp. Okay, my handwriting, bro. Okay, so last timestamp. This is what we are getting. I hope you are understanding what I'm writing over here, or do you guys want me to write the code directly? Because I wouldn't be able to write the code directly. I also need to understand what I'm doing over here. Okay, and then should we check? I guess we should check if this elapsed time is greater than 0. Then only we need to like refill this. So
we need to refill this, so this we can directly use maybe. Sorry. Yeah, so this we need to use math.min. Sorry for that. And whatever we wrote, like capacity and elapsed time into refill rate per second. So this is what the logic that we need to explain in the interview. Okay, that is why I'm doing it very slow and steadily and understanding what I'm over here. Oh, I'm sorry. Uh, yeah, I don't know why second day's response is little bit off, but anyways, I'll continue. So this is like the new tokens from this. So we need to update the tokens continuously. So let me assign it to tokens. Okay. Then what we have to do again? So tokens update हो गए. This is just the refill method. We are not extracting anything from this. So I guess this is enough for this tokens we are updating, and we need to also have this timestamp mapped. So because for next time we need this, so last timestamp is equal to this now. So this much is enough. Let me write this method so that we will be on track. So public void method name is refill. Okay, and we will not take any parameters in this. So here we need int now is equal to system dot uh, current time in millis. Okay, no, not this. And then elapsed time, we have to count the elapsed time. How we counted the why it's crying? It's a long. Okay, it's a long. And then we need elapsed time. So maybe elapsed time is also in the no, but elapsed time wouldn't be in the long. So elapsed time is equal to this now minus this what is this, last refill timestamp, last refill timestamp. Okay, this is what will give us why it's a long. Okay, we also need this as a long, but last it will be in the milliseconds. Okay, we don't want it in the milliseconds, we want it in the seconds. So divide by 1000. Okay, so divide by 1000, and then it won't let us oh, it is not letting us do this. It's okay, we'll keep it in the long. And if this elapsed time is greater than 0, then we need to calculate the tokens again. So tokens is equal to math dot mean, and among oh the math dot mean capacity oh tokens plus elapsed time we didn't ये हमने मिस कर दिया था, tokens plus नहीं लिखा है यहाँ पे. ओके, and last timestamp would be outside of this, no, not inside, if I'm not wrong. So this is the basic. हम इसको बाद में और भी better बना लेंगे, लेकिन for now I think this much is enough. Okay, because we are adding the tokens in this bucket, so this is the method that we need. So for adding the tokens, this refill, how this refill will work. ठीक है, this much is enough for this. And then
why it's showing this. Yeah, consume method. The uh, IntelliJ showed us the next method. Yeah, try consume. So we also need try consume method over. So we need to consume this token. Okay. So in the book there was something given. Yeah, refiller is what we created. A token bucket is a container that has predefined capacity. Yes, this is condition met. Tokens are put in the bucket at present rate. At present rate, periodically, once the bucket is full, no more tokens are added, as shown in the figure. Okay, so this is what we did. The token bucket capacity, the refiller puts two tokens. I want to know how we will consume. Consume logic would be straightforward, I guess. Per second, we are consuming one token right now. So what is our token rate per second? So that much, no, per request we are consuming. So if there is a request, we will just reduce the number of tokens. uh, I'm guessing that's it. Okay. Mm. So today we are only building this bucket algorithm. Okay, there are multiple algorithms present to do the rate limiting. There are four different types of algorithm. The first one is the bucket. I don't want to talk about the other ones. Those are fixed and sliding window buckets as well. So today I'll only build this token bucket algorithm, because in the interview the interviewer for sure they ask ki how which kind of algorithm you will use, how it works, and what are its pros and cons. So we should be able to answer all those questions. Okay, so the refill is I think sorry, refill बोल रहा हूँ, consume वाला. So अरे Amazon डीलर इतने रात को. हेलो 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 हेलो. इतने रात को Amazon डीलर कहाँ से आता है? नहीं है भाई, sorry. Sorry for that. So we need to now consume the tokens from the bucket. Okay, so this is our bucket. Consider it as a simple bucket. Here are tokens present. Okay, and from this we will consume the token once there is a request. Okay, so we will simply write this method as like the ideal name is try consume. Okay, so in this method, every method will first do the refilling. Okay, because we are not running this job in the background, so we need to run this refill logic everywhere first. That is for sure. ठीक है, हमने R capital लिखा है वो गलत है. Then we need to check कि if the current tokens uh, is like greater than 0. In that case, do just टोकन्स माइनस माइनस. एक टोकन माइनस होगा क्योंकि एक रिक्वेस्ट के लिए ये हम सर्विस में यूज़ करेंगे ये फंक्शन को. ठीक है, दैट्स इट आई गेस. एंड विल आल्सो रिटर्न बुलियन फॉर आवर हेल्प की एंड return true. That means the token has been consumed, and service will know that yeah, token is consumed and I don't have to block this request. I need to move this request to the backend, to the correct API server, and then return false if not. Okay, so this is the try consume method. So public boolean try consume method. ठीक है, इसमें let me make this r small. So first thing that we need to do is like refill. Okay, yeah, this is the logic that we want actually. uh, Okay, try consume and refill. Is there anything else that we need? I don't think we need any more thing. Just think if I need to add any getters over here. So let me add the standard getters and setters: capacity, tokens, last refill, timestamp.
capacity only. Setters for read. Okay, this much is enough. Okay, so our token bucket is kind of ready. I don't know why it's crying. uh, Let it cry. uh, okay, so this is it. And then we created a service interface. So this is the interface that we need to have. And let me come to the this. Okay, so this is what we wrote yesterday. So this is the filter that we wrote. It is extending once per request, because the rate limiter will run once per every request that has been hit to this API gateway. Okay. So in this one, this is the conventional way of writing the filters in the Java. And yesterday what we wrote over here is like do internal filter. मेरे को याद नहीं था, लेकिन this is the syntax for this. हम क्या कर रहे हैं, we are just taking the client ID, path, and method. It is the IP address from the request, and then creating a rate limit request. Okay, so rate limit request is kind of a DTO that we created. It has only this thing. It's a record, DTO record, and it has client, path, and method. So this is what we did till now. And we will be checking rate limiter service message check. And if from this result we have to make this, we haven't made this. If this is like allowed, then we will set the headers, set the appropriate headers, and send the request to the concerned API server. This is the core logic of the rate limiter project. Okay, and then if else, then we need to block this request. So too many requests, yes. Application JSON string, uh, yeah. So else वाला तो इसने लिख के दे दिया अपने को. Just see too many uh, request. It's crying. क्या हुआ इसको? Do we need to add some dependency or something over here? HTTP servlet response. Fix this syntax. Today is very dull, guys. I don't think you guys are enjoying this project, but I want to build it. Whether you like it or not, I want to make SC too many requests only, no? So is it not imported Jakarta? Uh, Jakarta servlet. Yeah, it is there. Then why it's crying? I am not sure about this. Cannot resolve symbol. अरे यार सीधा हम 429 लिख देते हैं. 429 देना है अपने को, तो 429 लिख देते हैं. 429 सेट दिस. एंड दिस क्या, इसने क्या मैसेज लिखा है? मैसेज मैंने नहीं लिखा है. रेट लिमिट एक्सीडेड, ट्राई अगेन, retry after seconds. So do we have this method in the result? Retry after seconds. I don't think so. uh, okay, so we need to create the allowed wala path, reject wala path to straightforward. I'm fixing my site at the moment, and others aren't in sight for some reasons. I'm fixing my site at the moment, and others aren't in sight for some. Okay, okay, okay.
Let me turn on the music. I think I can stay silent and do my work as well. I don't have to explain it. Mm, so uh, there is at the end we need to like do this filter chain dot do filter and request response. This is what we have to do at the end, but for that we need to manipulate the response. Okay, so we need to add the headers in this response. So we can write this first before this set header, what it's giving. Set x rate limiting string value of result dot limit and remaining. These are all things we don't yet have. Uh, so we need to have it. So maybe this is enough. Okay, for this now we can build our uh, why it's crying. Actually, there are these methods are not present. So now we need to, but we only have only one method in this request. I'm not sure about this now. I hope I'm audible correctly. It's not low. Uh, I'm listening to your stream as I'm fixing the site. My result page is kind of a childish, but I'll leave it. Yeah, yeah, it's okay, bro. It's absolutely fine. Who said childish is wrong? You can have it. I have always seen that like this Thursday night is always kind of a dizzy night for the subscribers. Like they don't usually join on this Thursday night, so maybe I should be doing lead code on the Thursday night if that is the thing. Wednesday night they really enjoy because it's like right in the week. Yes, yes, you are audible. Thank you, Yash, for letting me know. Now I'm thinking what this limit and remaining limit. So all these things like uh, this should be like capacity, not limit. Capacity. Yeah. Our result has capacity. Yeah, our result has capacity. So can we add a getter and setter over here? Is it allowed? No, it is not allowed. So it's a record, so we don't need to have a. Okay, I understood. And then what else we had in this result? Remaining sequence or retry after seconds. So result dot rate limit retry after seconds. So yeah, yeah, this is perfect. So this is done. This filter is like I don't think we need to do anything in this one. So this is perfect. So if result allowed, then we will add headers, both the headers like rex rate limit, and it will like give the capacity how much capacity the bucket, the kind of bucket that we have assigned to that particular API from the request that we are setting that into the response.
and then there is this rate limiting remaining, so I'm sending the after seconds. Okay, so should we send after seconds कि कितना seconds बाकी है, or should we send the number of tokens has left? There is remaining tokens as well, so let's pass the remaining tokens. इसका उसको कुछ करना नहीं है user को, so tokens is better. So this is nice. Are we using this? What's it saying, suggesting? Try again in, okay. No, this is something wrong. It did change. Retry after second. This is correct only. I don't want I don't want to make it too fancy. Okay. Now the most important part is to write this service. This is where I'm like my mind is struggling with. So implement this. Why it's not giving me this? मला जाऊ द्या ना घरी आता वाजले की बारा. Yeah, implement this check method. So how this check method will, I don't have an idea about this. Uh, I have my result pages. Yeah, I read this. Yes, yes, you are audible. I have a portfolio website, but I got bad reviews for it from a recruiter. It's okay, bro. Work on those reviews, na. It's good that your recruiter gave you feedback on that, so you can implement that. So let me think about this rate limit check की how would we check. बुक में नहीं दिया है because I was reading about this. The algorithm takes two parameters, bucket size and refill rate, that we have created. Bucket का logic is clear. Leaking bucket algorithm, yeah, this is another thing. So we need to check. Can you guys think of like how can we check the rate limiting result? We have to check, we have to check in the memory right now. Okay, in the memory go and check for the current key. We don't have a key, so for the current key is there. Let me draw it, I'll also understand. यार मेरे को ये रूलर यूज करना सीखना है इसका ना. Okay, I understood. I understood. This is funny. Is it, ये लाइन देगा मेरे को? ओ ये एकदम स्ट्रेट लाइन दे रहा है. ओ नाइस नाइस. अरे लाइन कहाँ गया? क्या हुआ भाई? क्या हुआ है, चल क्यों नहीं रहा भाई?
It's very difficult to handle, no? What the fuck? This is a laggy application. This is very good thing that I am building. You guys are apparently not interested in this, but you don't know the value of things right now. Hence, you are not uh, seems interested in this. Okay, so try consume is we did. Now we need to like check. So in the service we need to like check this. So we'll for sure override this because we are implementing this, and we'll name this as check. uh, इसमें भी स्ट्रेट लाइन नहीं निकल रही है स्केल से हाँ हाँ यार अरे ये मैकबुक के लिए है ना विंडोज ने जो मस्ती एप्पल जब दूसरे प्रोडक्ट के साथ करता है ना कि दे डजंट लेट देयर एप्स वर्क ऑन देयर अदर विंडोज और कोई अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे सेम बकचोदे जानबूझ के विंडोज ने मैकबुक के साथ किया है कि ले भाईचोद मैं विंडोज में इतने अच्छे अच्छे फीचर्स दे रखे हैं वन नोट के लिए लेकिन जब यू आर गोना यूज इट इन द मैक और on the browser it doesn't give you like 10% of the features that it has. So Windows literally said fuck you Apple. So yeah, द रेट लिमिटर सिस्टम डिज़ाइन के अंडर आएगा. यस 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 अरे वही तो मैं किताब ही रेफर कर रहा हूँ. एलेक्स यू तुम अगर गूगल करोगे इस बंदे को ही इज़ अ वेरी रेप्यूटेड पर्सन. इसका ही बुक है ये एलेक्स यू ही इज़ अ वेरी रेप्यूटेड इन दी सिस्टम डिज़ाइन. और इसमें से यूआरएल शॉर्टनर जो मैंने रेफ़र किया था उसमें मज़ा आ गया करने में तो इसीलिए मैं रेट लिमिटर करा. रेट लिमिटर हालांकि इसने एज अ कंसेप्ट करके दिया है. इट्स नॉट Man waiting in the sky. तो यही हम कर रहे थे. देखो इसने क्लियरली दिया है कि इंटरव्यू में तुम्हें ऐसे ही मेरे को ऐसे ही बहुत बार पूछा है. वी शुड हैव दिस काइंड ऑफ अ कन्वर्सेशन इन द इंटरव्यू दैट वी शुड आस्क द क्वेश्चन टू द इंटरव्यू whenever the interview gives us any question like design this XX kind of a system, then we should ask at least 4 or 5 question, and then only we'll start like take the data, write it somewhere, and based on that data try to explain what we are trying to do, what kind of things we have done in past so we can implement those kind of a thing. And hence that is why this in interview at no point in time they will ask you to write the complete code, but the code, the logics that at least we should know. For example, this the token bucket that I just created, it is not tested yet, but कहाँ गया token bucket. So this token bucket simply the how this current logic is working. I explained both the methods, how refill is working and how try consume will work. So uh, पीसी बनवून घ्या. पीसी बनवून घ्या घरासाठी. येस. अरे MacBook, I purchased a MacBook for all of these things, but I never knew कि MacBook is such a shitty product. I'm gonna build a PC after getting a job. First like dream है खुद के एक एक पार्ट लेके बिल्ड करना है. यस या पता है ये सब ना, जैसे तुमने बोला ये सब ड्रीम्स होते थे पता है जॉब के पहले, लेकिन जब जॉब लग जाता है ना भैंचोद कुछ टाइम ही नहीं मिल पाता. ऐसा लगता है कि यार दिन में 24 घंटे या बस 4 घंटे चालू होता है खत्म हो जाता है. ऐसे सोया मैं कि मेरा एक क्लास बक फिनिश करके ख़त्म करके मैं सोया, सुबह उठा एक और बग आ गया या कुछ काम आ गया कुछ और आ गया. साला ये ख़त्म ही नहीं होता. मराठी में कहावत है ना, दात आहेत तर चणे आहेत, चणे आहेत तर दात नाहीत. तसं पैसा तो आएगा भैंचोद, फिर खर्च करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें. So we need to create a key for sure. So schema का
So first, so we will build a key. Okay, the key and value pair that we will have. So for this key, I was reading what could be the better way. We'll just pass this rate limiting request, and whatever is there, we will just use it. So rate limiter request and request. Okay, so we'll pass all these things. So how should be our key? Our key should be like how should be our key, bro? So ampersand d colon ampersand, three things will be there, whatever that we have in the record. So from this request, we will get request dot client id, which is the IP client id. Request dot क्या है अपने पास, rate limiter request, path and method. So path and request dot method. Motherfucker, ये देखो भैंचोद मैक। हाँ भाई रिलोड। मेरे को एक स्ट्रीम करना है जिसमें मैं एक बार भी अपने मैकबुक को गाली ना दूं। जिस दिन वो होगा उस दिन मैं सच में मानूंगा कि भाई ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है। और इससे अपने को टोकन बकेट, इस मेथड के लिए टोकन बकेट भी बनाना पड़ेगा। सो शुड वी डू दैट? आई एम नॉट श्योर। लाइक क्रिएट टोकन बकेट, लेट मी राइट इट इन दिस मेथड फर्स्ट। ओके, अपने को क्या क्या करना होगा यहाँ पे। सो पहले तो क्रिएट की, ओके, देन क्रिएट टोकन बकेट। और क्या लगेगा अपने को? फिर बकेट मेथड में से अपन ने जो बनाया हुआ है बकेट, दिस इज द टोकन, कहाँ गया, दिस इज द टोकन बकेट। फ्रॉम दिस टोकन बकेट वी विल कंज्यूम, जस्ट विल यूज ट्राई कंज्यूम, and if this is so, then we'll return allowed, and if not, because it's a boolean method. Okay, so I understood what to write in here. So we will write key, we'll check bucket, uh, bucket dot consume. If this is true, then we'll simply said allowed, else we'll say blocked. So that is the whole logic of this. So this method, public rate limit check result, it's returning two type of result, that we make, one is allowed and one is blocked. So these two result we have to send in this one. So let's create the key first. What you guys are saying, something new? uh, I'm gonna build, ये पढ़ा मैंने, पैसे कमाओ और खर्च करने का टाइम नहीं है। The right vibe match, yes, true, bro. I'm thinking about making a Chrome extension like plugin. I wanted to push my code from lead code to GitHub, right repo, and I'm building that. अरे बहुत ही मस्त है यार, this is nice idea. अगर बन गया होगा तो मेरे को भी दे देना भाई। I'll use that plugin, क्योंकि मैंने सोचा नहीं, लेकिन ऐसे मैं सोच रहा था कि जो भी कोड लिखूंगा मैं अपने इंटेलिजे में लेके आके उसको फिर पुश कर दूंगा गिटअप पे, बट नेवर थॉट ऑफ दिस आइडिया। नाइस आइडिया एक्चुअली, अथर्वा। जी जी ब्रो, नाइस आइडिया। यार मैंने डिस्कॉर्ड का लिंक नहीं डाला यार, लेकिन डिस्कॉर्ड का लिंक मेरे को नहीं देना है। डिस्कॉर्ड इज लाइक नॉट वर्किंग, बहुत सारे लोग उस पर ऑनलाइन ही नहीं होते, तो क्या ही फ़ायदा है। बेटर कि तुम लोग मेरे को लिंक्डइन पे टेक्स्ट करो, सो दैट कहीं पे भी टेक्स्ट मत करो मेरे को, छोड़ो। Nice. So let's first create the key. Okay, so string key is equal to request client. This is this correct? What all things we need? Let me close this unwanted things right now. Token bucket में अपने को क्या क्या चाहिए? Capacity, refill, tokens, और is the token bucket is what we need to use. What are you saying, bro?
Is it like worth making? It already exists, but I want custom things, so I want to. Yeah, always good, bro. See, ये सब प्रोजेक्ट है ना कि तुम करोड़ों रुपए कमाने के लिए नहीं कर रहे हो, ये तुम किस लिए कर रहे हो ये सोचो। कि एक तरीके के 10 चीज़ें अवेलेबल होती है, हज़ार चीज़ें भी अवेलेबल होती है। इफ़ यू गाइज हैव रेड, मैं तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन जस्ट डू इट योर लर्निंग पर्पस, ठीक है? ये सब बना के तुम सीखोगे। और पता है आजकल क्रोम एक्सटेंशन हैव बिकम सो हेल्पफुल, आई नेवर थॉट देयर आर सो मेनी क्रिएटिव वेज ऑफ यूजिंग क्रोम एक्सटेंशन। मेरे ऑफिस में एक बंदे ने बनाया कि वी वांटेड टू यूज द रिमोट सर्वर on the local, like while we doing the local development, there was no option available. So what he did, he created a simple extension from where from the remote server he was grabbing the token, keeping the token in the memory, in the browser memory, and whenever we are doing the local, it's injecting that token. So it is a so simple, so nice idea that from the local we are able to hit the APIs to the remote server and do the fixing of bugs, because it was so difficult to fix a bug. We had one pipeline where we had to wait 30 minutes, do a change, deploy, and test. It was so fucking hilarious. But the Chrome extension came into the picture, and the whole trajectory of the application changed. Now every bug is getting fixed within like 5 minutes. This is very nice. पता है ये सब तुम एक बार कर लोगे जिंदगी में, और कल जाके कोई कंपनी में इफ यू वर्क एट सम कंपनी और वहाँ पे कुछ इशू आएगा, यू विल बी द फर्स्ट वन टू थिंक अबाउट सच काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन, बिकॉज तुमने ये पहले किया हुआ है। सो डू सच काइंड ऑफ थिंग्स मोर, सो दैट यू विल बिकम अ गुड इंजीनियर, यू नो। सो कंपनी में तुम पहले हो गए, तुम्हें पता चलेगा। और डोंट वरी अबाउट दैट, आई टेल यू वन कंसेप्ट, ओके? 0 to 1, अगर तुम लोगों ने ये किताब पढ़ा होगा तो इट्स बाय द पीटर थिल। अगर तुम लोगों को पता नहीं होगा, ही इज़ द रीज़न फॉर द ट्रम्प्स फर्स्ट सक्सेस। डोनाल्ड ट्रम्प जो यूएस का प्रेसिडेंट बना था, उसके पहले टर्म में इसने बहुत काले धंधे करके उसको जिताया है, वो मैटर नहीं करता। लेकिन द कंसेप्ट सेड इन दिस बुक 0 to 1 is like too good. There are companies like which invents new things. There are people who invents new things, and those comes. Let me draw it for you. तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? So this is the line of inventions. Okay, this is the line of inventions. This is 0, and this is infinity. Okay, and this here is 1. Okay, so this area is like whatever the new inventions happen, new inventions. Whenever such inventions happens, okay, the people convert them to companies, and those companies becomes monopolies. So those companies become राजा, मतलब वो बाप बन जाते हैं कि मोनोपोलिस बोलते हैं उसको, ठीक है? कि मतलब उनके अलावा कोई नहीं है। एग्जाम्पल लाइक गूगल, फेसबुक, ये सब चीज़ें, फिर माइक्रोसॉफ्ट, और टू बी ऑनेस्ट इसमें लिनक्स भी है। But he didn't monetize it for the worst of world. He never monetized for the good of world. Okay, but the companies monetized it. So these companies comes under this. But other ideas, like there is Instagram. So Insta comes in here. Okay, so Insta is almost similar to Facebook, but it has some its own features. So we the normal people can easily build things in this one, because suppose किसी के पास पेट्रोल पंप है, ऐसा नहीं है ना कि दुनिया में एक ही बंदे के पास पेट्रोल पंप हो सकता है, और किसी के पास भी हो सकता है। सो यू कैन कॉपी द बिजनेस, बिकॉज ही इज केटरिंग द सम ऑडियंस इन सम कंट्री, यू कैन केटर द सिमिलर काइंड ऑफ ऑडियंस इन योर कंट्री। सो योर इन्वेंशंस कैन लाई ओवर हियर, देर इज नो शाय कि ये पहले से एग्जिस्ट करता है तो मैं कैसे बना, और मिलियंस बिलियंस ऑफ चीज़ें पहले से एग्जिस्ट करते हैं फिर भी लोग बनाते हैं। सो दिस ये मोटो था बताने का। रेफरेंस के लिए क्या कहाँ तक पढ़ा था मैंने? इज इट वर्थ मेकिंग, या रेफरेंस के लिए कहाँ बुक में लिखते बैठूँ, इसलिए गिट पे कर रहा हूँ, बट वो बहुत एक्स्ट्रा काम है। हाँ हाँ, yes, it is good. I'm also thinking about like a team working environment as such, as a compiler
which has a storage as well like Google Colab, and whole team can work on one project and see others work live. So ओ लाइक फिग्मा यू मीन टू से फिग्मा में जैसे डिज़ाइन लाइव करते हैं अलग अलग लोग, मर्ज के एफर्ट्स बच जाएंगे. यस. हाँ. कोड में ऐसे नहीं काम चलेगा ना यार. लाइव अगर सब लोग एडिट कर रहे हैं तो गूगल डॉक्स में कोड लिख, मतलब गूगल डॉक्स की तरह बोल रहे हो तुम. ये इसमें मेरे को, अरे गाइस प्लीज डू लाइक द स्ट्रीम यार. आज पता नहीं, आज लोग बहुत डल ऑडियंस है, किसी ने लाइक नहीं किया होगा, तो प्लीज डू लाइक द स्ट्रीम. Where we were here, so we were making the key and then trying to this. ये मेरे को नहीं पता यार सर्विस कैसे लिखना होगा इसका. आई थिंक आई नीड टू टेक द हेल्प ऑफ एआई इन दिस वन. टोकन बकेट बना लूँ मैं, लेकिन फॉर एग्जांपल चलो एक टोकन बकेट बना लेते हैं, फिर सोचते हैं कि टोकन बकेट इज इक्वल टू न्यू token bucket and request capacity, but rate limit request has client path and method. It doesn't has these many things, so we need to have a default capacity over here. So let me create int default capacity, yes, and yes 10. So here I can have like default capacity and default refill tokens. But what about the refill interval? So default, इसको भी हम 1 सेकेंड रख सकते हैं डिफॉल्ट. क्या बोले इसको, डिफॉल्ट रिफिल इंटरवल 60 सेकेंड्स नहीं, 1 सेकेंड रखते, नहीं तो हम टेस्ट ही नहीं कर पाएंगे. लेकिन इस बकेट को हम कैसे यूज करें, क्या हुआ. इट नीड्स 4 पैरामीटर्स. कैपेसिटी, int capacity, int refill per second. टोकन बकेट्स में तो आई डोंट थिंक दिस इज अ करेक्ट. capacity is also this and this. Initially we are initializing it, yes, that is what we discussed yesterday. uh, like when you are working on token bucket, someone else can work on UI and they can refer to your code as you write it. May give many errors, but will get work done faster, I guess. Like when you are working on token bucket, else can work on UI and they can refer to your code as you write it. May give, yeah, can I'm not able to connect with you. Maybe you are thinking correctly, but how you will resolve these issues when there are like 100 developers working on the same page? उस condition कैसे करोगे? आ, यार ये मेरे को सर्विस में गड़बड़ ही लग रही है यार. गड़बड़ क्या मतलब, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बना है. टोकन बकेट में हमने डिफॉल्ट कैपेसिटी और डिफॉल्ट रिफिल टोकन्स दे दिया, ठीक है, इससे टोकन बकेट बन गया. लेकिन आगे क्या, अपने को इसको मेमोरी में भी स्टोर करना होगा ना, तो वो मेमोरी हम कहाँ बनाए. मेमोरी यहीं बनाए क्या, हैश मैप बना ले क्या यहीं पे.
कल चैट जीपीटी से हमने देखा था कि उसने हैश मैप ही बनाया था, तो मे बी वी कैन हैव दिस ओवर हियर सो इन मेमोरी, उसको बाद में हम रेडियस में कन्वर्ट करेंगे. सो राइट नाउ तो हम we will have like private yeah, concurrent hash map. So in this concurrent hash map, okay, इसने क्या दिया ये token bucket, token buckets dot compute if absent key and k value. या okay, या इसने सही से किया. ठीक है. नाउ अभी अपने को ये बकेट से कंज्यूम करना है बिकॉज वी हैव दिस मेथड. सो इफ token bucket dot try consume, and then if it returns true, that means there were token present and one token has been reduced. So we need to return rate limit result dot allowed, and allowed में yeah, and in else return this. allowed में क्या क्या भेजना है? allowed true, capacity and remaining tokens retry after this. uh, so कैपेसिटी तो ये बकेट का कैपेसिटी. ठीक है. और क्या था इसमें? रिमेनिंग टोकन्स, टोकन्स गेट रिमेनिंग. ये मेथड नहीं है अपने इसमें, तो अपने को ये मेथड लिखना पड़ेगा टोकन बकेट में. सो लेट्स राइट दिस मेथड. टोकन्स का क्या है अपना? डबल. सो पब्लिक डबल गेट गेट रिमेनिंग टोकन्स. ठीक है. अब ये रिमेनिंग टोकन्स मतलब क्या देगा? जस्ट रिटर्न टोकन्स, रिटर्न टोकन्स. रिटर्न टोकन से काम हो जाएगा अपना. इसमें अपने को रिफिल करने की ज़रूरत है क्या? रिमेनिंग टोकन्स लेते? आई डोंट थिंक वी हैव टू. लेट्स यूज दिस गेट रिमेनिंग टोकन्स ओवर हियर. गेट रिमेनिंग टोकन्स. what it's saying? Required type int but got double. Okay, so let me typecast it. Okay, it worked. And then else, okay, else this blocked. ब्लॉट के लिए भी सेम ही चीज़ है क्या? कैपेसिटी एंड रिट्राई आफ्टर सेकेंड्स. रिट्राई आफ्टर सेकेंड्स तो हमने नहीं डाला है अभी. सो अपने को ये लगेगा कि टोकन बकेट डॉट रिट्राई आफ्टर सेकेंड्स मेथड भी लगेगा अपने को यहाँ. तो लेट मी राइट पब्लिक रिट्राई आफ्टर सेकेंड्स का क्या टाइप है भाई? रेट लॉन्ग. सो इट शुड रिटर्न लॉन्ग. लॉन्ग रिट्राई. इतना मस्त गाना चला है भाई, मज़ा आता है ऐसे करने में. रिट्राई आफ्टर सेकेंड. ओके, चलो इंटेलिजेंस है अपने पास तो मदद कर रहा है. रिफिल इफ टोकन्स ग्रेटर देन जीरो, देन जीरो. या देर इज नो ये दिस एंड देन, ये मेरे को नहीं समझा. ये क्या है? लेट इट बी. अपने को वो इतना ध्यान नहीं देना है. रिट्राई आफ्टर सेकेंड्स. ठीक है. आई गेस दिस इज इट. दिस इज इट. व्हाट यू गाइस आर सेइंग? मैंने मैसेज नहीं देखा बहुत टाइम से.
I was just thinking to develop this for a hackathon team, but the case of 100 developers, we can still divide environment as like front ends get divided and only few devs will be concerned with the backend. Okay, like connectivity will only get handled by like one dev and others can just keep working on different pages of website together, like some parts of project which needs like transition from the page. बट यार उसका फ़ायदा क्या है, तुम वो बताओ ना मेरे को कि मतलब मैं एक फीचर डेवलप कर रहा हूँ, एक फीचर दो लोग बैठ के तो नहीं डेवलप करते हैं एज फार एज आई हैव सीन इतने वर्क एक्सपीरियंस में. तो आई एम आस्किंग यू फेयर क्वेश्चंस, यू नो, कि इन विच कंडीशंस इट विल बी हेल्पफुल. लाइक in designing I can say yeah, Figma में है वो feature. In Figma multiple developers can work together and design, do the designs. That is fair, because there is no GitHub possible for that. But we have GitHub over here and we usually, just a second. Hello. Hello. बोल ना सर. बोल बोल busy मत बोल. हा हो हो येस येस. जायचं ना रविवारी. हो येस. का नाही जायचं या इथंच तर आहे. विशालचा फोन आला होता मला, विशाल पण म्हणे जाऊ. जाऊ रविवारी. हो हो चालतं चल. येस. Like connectivity will only get handled by one dev and others can just keep working on different pages of website together, like some parts of project which needs like transition from page to page. Hmm, I'll still say कि work on your first idea जो तुमने बताया ना GitHub पे push करने का extension, that is more not one feature but dependent features like connectivity or functions or class you can create which other member. You know, this is similar thing. I'm like जिसने जब फर्स्ट टाइम गिटहब गिट बना था ना, नॉट गिटहब, मैं तुम्हें दिखाता हूँ. दिखाओगे तुम्हें ढूंढना पड़ेगा जो पहला गिटहब का कमिट है ना. अगर वी गो ऑन गिटहब एंड वी सर्च फॉर लाइक गिट दिस गिट, इसका अगर हम कमिट्स में देखें, बिकॉज दिस इज वेयर इट ऑल स्टार्टेड एंड जब ये पहली बार बना था, नॉट 2005. See, if you go and check the Linus Travels, this is the guy who created. सो इनिशियल गिट रिवीजन, ये बेसिक आइडिया जो उसने बनाया था ना गिट का, ये तुम एक बार देख सकते हो कि चैट जीपीटी को पूछ के इसने क्या लिखा है. इसने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है ये सब कि उसको क्या बनाना है गिट में, क्यों चाहिए. ही हैज़ मेंशन द प्रॉब्लम्स दैट यू आर सेइंग, वो सब प्रॉब्लम्स भी इसने बताए हुए हैं. तो यू कैन रीड. ये सी में है, सी सी एंड सी प्लस प्लस, सी में ही है मोस्टली है. या सो इट्स मोस्टली इन सी. सो गिट द स्टूपिड कंटेंट ट्रैकर. उसका पहला आइडिया भी थोड़ा सा अलग था, जो आज का गिट है ना वैसा नहीं था. तो यू कैन रीड, तो तुम मे भी कनेक्ट कर पाओ इसके साथ. दिस इज़ वेरी नाइस. आई होप तुम लोगों को लाइनस पता है, लाइनस टॉवर्स. ही इज़ द गाय बिहाइंड क्रिएटिंग द लिनक्स एंड द गिट. क्या बोल रहे हो और. बट वो लाइव सर्वर पे चलता नहीं है ना. हाँ हाँ, वो लाइव सर्वर पे नहीं चलता है, दैट इज़ ट्रू, बट इट्स वेरी फास्ट, यू नो. कैशे कैट फाइल कितना अच्छे से उसने ये किया है, रीड मी.
read cache. Let's write this readme. Git can mean anything depending on your mode. Random three letter combination that is pronounceable and not actually used by a common Unix command. The fact that it is a miscommunication of gate, mispronunciation of gate may or may not relevant. Stupid, contemptible, and despicable. Simple. Take your pick from the dictionary of slang. Global information tracker. You are in a good mood and it actually works for you. Angel Singh at बाप रे ये उसने एआई की दुनिया के पहले लिखा हुआ है भाई ये सब. दिस इज गुड. तुम लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये एग्जिस्ट करता है ऐसा रिपोजिटरी. देखा तुमने अथर्व. Let me ask this to AGY. Is this my check method correct? ठीक है, I'll consider it as correct. इतना टाइम नहीं है अपने पास सोचने का. One related problem. What the fuck is problem? Should I try this once? और रेट लिमिटर भी हमने लिख दिया तो आई गेस अपना सब कुछ हो गया है ना. एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या क्या एरर्स है. लेट्स मोमेंट ऑफ ट्रुथ नाउ. there are errors. Application failed to start, web server failed to start, port already in use. What the fuck, port is already in use? Where is the port is used? The port is not supposed to be in use. Port की use में bro. I need to kill the port. वो command भूल गया यार. How to check what's running on port and kill it. On Mac Pro. This is the PID that we need, and there is a, yeah, kill hyphen 9 and this PID. Kill. Now let's restart. It worked. Why the fuck it worked? ये तो रेड दिखा रहा है. मेरे को लगा इसमें एरर आएगा. ऐसा तो नहीं. अब हम टेस्ट कैसे करें इसको? There is a health API, that I we can run. Is there a API? No, there is like health API that is always present. So there is curl command. I was checking this. ये हमेशा होता ही है ना. Yeah.
सो ये ऐसे तो टेस्ट नहीं हो पाएगा, मेरे को इसका इन मेमोरी में साइज कम करना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी 1 एंड डिफ़ॉल्ट रिफिल टोकन्स 1 कर दूंगा। ठीक है, सो मे बी नाउ वी कैन टेस्ट इट यू नो। सो उसके बाद अपने को वो भी सोचना है कि हम उसको दूसरे प्रोजेक्ट में कैसे इंजेक्ट करेंगे, बिकॉज इट्स अ गेटवे। गेटवे को अपने को कनेक्ट भी करना है। इसकी माँ का ये भैंचो चूतिया मैकबुक मेरे को उधर चाहिए, वो नहीं करने देगा। मेरे को पता है, यहाँ पे बंद करके मेरे को खोलना पड़ेगा। यहाँ पे ये यहाँ पे आया देखो, चूतिया मैकबुक। ठीक है, एक दो तीन चार आने लगा क्या, या 429 आया अपने को यहाँ पे। इफ यू गाइस सी दिस, इफ यू गाइस हैव फकिंग आईज देन यू कैन क्लियरली सी 429। यस, तो कितने रिक्वेस्ट के बाद आया ये? 200 200 तो रिक्वेस्ट गया, उसके बाद 429 आया। करंट लेंथ, content length 49, content type, where are the response headers, elevation json, content length 59, content length 59, 59, 59, content length x rate limiting 1, x rate limiting 1, x rate limiting 0, remaining 0। उसके बाद हुआ ना, अगर मैं फिर से इसको हिट करूं तो या इट्स 200, फिर से हिट करूं 200, आई हैव टू हिट विद इन अ सेकेंड। ओके, if I hit within a second, so let me clear this. uh, okay, 1 2 within a second if I do, I get 429। okay, एक सेकंड में एक ही रिक्वेस्ट अलाउड है। so per second one request is allowed, and that is what we have built। I am very happy with myself now। अबे यार टर्मिनल, अबे यार फिर से दूसरे इसमें चला गया। अबे मेरे को नहीं चाहिए ऐसे, हाँ ऐसे चाहिए मेरे को। समझा ना तुम लोगों को क्या हुआ? मैं टाइम ले लेके हिट करूंगा तो चलेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं चलेगा। इट वर्कड, इट वर्कड यार, इतना ही तो चाहिए था अपने को। तो ये बकेट बनाए हमने, जो बकेट 4J यूज करना था वो हमने यूज नहीं किया, बिकॉज वी डोंट वांट टू यूज एक्सटर्नल लाइब्रेरी। द बकेट वी क्रिएटेड आवर सेल्फ। आई डेंट थिंक इट विल वर्क, बट ये रेड दिखा रहा है, जस्ट इग्नोर दैट। एंड या इट इज़ प्रिटी सिंपल। इसमें रिफिल मेथड बनाया, ट्राई कंज्यूम बनाया, उसमें भी ये गेट। दिस बुक इज़ वेरी गुड यार। ये मैंने किताब को फॉलो किया और कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा मेरे को, apparently। This is nice। So now I have to think of how I can inject the Redis cache, because currently I am using concurrent hash map, because once the application stops it will reset to null, which is wrong. So now the second step will be to use the Redis cache. So should I push this code till now? I'll push this code till now. Easily I can push this code. So I'll say clap. Yes, thank you so much। थैंक यू सो मच गाइस। अभी का जॉब रोल सिस्टम डिज़ाइन से रिलेटेड है मेरा। सिस्टम डिज़ाइन से नहीं, देखो अभी इंडस्ट्री में है ना, सिस्टम डिज़ाइन वगैरह के काम अभी भी डेवलपर्स के पास नहीं रहते। मेरे पुरानी कंपनी में थोड़ा बहुत आता था, यहाँ पे आर्किटेक्ट वगैरह ही करते हैं। तो yeah, backend developer. So the role that I am planning to move into, the next role, that for that I need system design, and hence I'm focusing. I have designed systems in past, there is no such scenario I have designed in past। thank you so much guys। इतना आसान था यार। देखो हम अगर अपना सिस्टम फॉलो कर रहे हैं ना, तो अच्छे से सब कुछ बन जा रहा है और समझ में भी आ रहा है। बहुत ही अच्छे से मेरे को समझा, और आई होप तुम लोगों को भी समझा होगा कि मैंने क्या किया है यहाँ पे। इफ़ नॉट आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। और मैं हमेशा एक वीडियो भी बनाता ही हूँ ऐसे प्रोजेक्ट्स का, तो आई विल मेक अ वीडियो। सो टिल आई विल से रेट लिमिटर
is working with the concurrent hash map, and this is fucking great, great for me. Yeah, yes, let's commit this. अरे commit and push, अरे push कर रे बहन के भाई. तू पास, ये देखो इंटेलिजे इतना घटिया है ना, ये लेगा पासवर्ड लेकिन फिर भी नहीं करेगा. पास की लेगा मेरे से, बोलेगा नहीं. पुश फेल्ड, परमिशन डिनाइड, पब्लिक की. अब सेम पब्लिक की से मैं इधर से ही मैं तुम लोगों को करके दिखाता हूँ कहाँ मैंने टर्मिनल इधर मूव किया, इसको मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, इसने बताया नहीं मेरे को अब तक आंसर. सी git push, it will ask for the pass key, same pass key I'll enter, and it's done. और देखो इस यहाँ पे इश्यू आया. क्या है इनका मतलब, मेरे को नहीं समझ में आता कभी कभी ना. और मैं सच बताऊँ तो मैंने मैकबुक जब से यूज़ कर रहा हूँ ना, मैं इन सब चीज़ों पे दिमाग लगाना ही छोड़ दिया, क्योंकि मैकबुक के ऐसे चूते चूते इश्यूज आते हैं ना जो नॉर्मली कभी आना नहीं चाहिए. अभी का जॉब रोल ये मैंने बताया शायद, अभी का जॉब रोल में नहीं है, इतना नहीं है थोड़ा बहुत 5-10%. ठीक है. सो नेक्स्ट जॉब वुड बी हियर टू इम्प्लीमेंट द रेडिस कैशे. सो दिस इन मेमोरी लिमिटर सर्विस, हमने रेडिस कैशे वाला जो प्रोजेक्ट किया था वो यूआरएल शॉर्टनर था ना. लेट मी ओपन द यूआरएल शॉर्टनर अगेन बिकॉज वी आर गोना नीड द यूआरएल शॉर्टनर अगेन. सो कहाँ था वो यूआरएल शॉर्टनर? या दिस इज द यूआरएल शॉर्टनर, उसमें रेडिस कैशे यूज़ किया था. लेट्स सी न्यू विंडो, या ओपन इट इन न्यू विंडो. And there is nothing else we did. We just in here we added this Spring Data Redis host, and there is a dependency that we added. So this is the dependency that we add. So let's grab this dependency and let's add this dependency to our current project. I hope we have added no dependency. So yeah, dependency is present already. And let me check the application properties. Yeah, it is there. So how we will use this? How did I use this? मैं भूल गया क्या कैसे यूज़ किया था मैंने. नहीं, रेडिस कैशे का ये बनाया था. यस, final redis template. Okay, this we can directly use it in our service. Okay, let's see. रेट लिमिटर सर्विस कहाँ गया इनमें? ये लाल क्यों दिख रहा है मेरे को? नफरत है ये लाल रंग से. तो इसकी जगह अपने को कॉन्करेंट हैश मैप की जगह ये चाहिए अपने को. रिव्यू एडेड इंपोर्ट्स. ओके, इंपोर्ट क्लास, इंपोर्ट द क्लास. व्हाट द हेक इज रॉन्ग विथ यू? सिस्को पैकेट, Cisco packet tracer cores are helpful to build career in networking. I'm not sure about that, bro. No idea. जिसके बारे में मेरे को पता नहीं होता ना, तो I'll rather refrain answering about that. Cisco packet tracker, I'm literally not sure about that. So why it's crying? Filled Redis template might not have been initialized. So is it, how is it initialized? There is no constructor over here, so let me add the constructor and Redis template. So yeah, stopped crying. And is this it? And then उसके बाद हमने क्या किया था Redis को, Redis template ops get key, and there is a set key also we did. Redis get key and set key, yeah, ops value. This is what we have to do. Okay, so where we are setting this concurrent map पे कहाँ हम कर रहे token buckets. Yeah, so this token buckets, so instead of this we'll name this as token buckets, and we'll just remove this
And yeah, don't cry, I'll correct you, bro. Just don't cry. uh Ready similar, this is fine. Token buckets. Now in the token buckets, we need that thing. So token buckets dot ops for value dot set. If not present, then only we are set. So key, uh, key and value. Why can't I have this thing over there? Let me think about this. आई गेस तुम लोगों को इतना पसंद नहीं आ रहा है आज, या आज डल रिस्पॉन्स है, हमेशा आज के दिन डल रिस्पॉन्स होता है, तो शुड आई एंड दिस इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग ऑन दिस, बिकॉज आई डोंट वांट टू हैव such dull response on Thursday. Usually I get such dull response. I'm not sure why, but yeah. Is there something wrong today? मेरे को यश कुछ दिखाने वाला था. यश, it's 1 hour, it's past 1 hour, so can you do you have the thing that you wanted to show? लेट मी थिंक कि मैं इसको रेडिस में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ. सेट की मेरे को हमेशा नहीं करना होगा, तो स्ट्रिंग कैश की. आई नीड टू चेक दिस. If this key, if it is not present, if this key is not present, then only I have to do this fucking thing and then get me this token over here. So token over here, and we actually don't need this. We actually need this much only new uh, token bucket. So I actually don't need these things, and I don't need this bracket extra. Okay, token bucket, and can I add a token bucket over here? So what it's saying, string. So how we will add the string, convert this to this Redis template. So it should be named Redis templates. uh, we should name it as Redis cache. This is a bit better, you know. Redis cache, yeah, Redis cache, and then this is Redis cache, Redis cache, this Redis cache is not null. Okay, so try consume ये, this will still be the same. So instead of this token bucket, uh, so this token bucket will come outside of this if. Okay, ये मेरे को हटाने दो इसको, कैश की, ठीक है, इसके नीचे. But then how we will set the value? So it should be a string. So Redis में हम कैसे सेट करेंगे?
how to set a value object in Redis cache in Java. To set an object in Redis cache, you must serialize the Java object into format Redis this. Okay, Redis template object and the new Redis template cf new string Redis serializer. What? What is this? Do I need to have a मेरे को ये बीन क्रिएट करना पड़ेगा क्या रेडिस कॉन्फ़िग का? I have a AI inbuilt, so I can ask uh, the AI. Uh, Now I'm going to add the Redis cache. So I need to replace concurrent map with Redis cache. So tell me, do I need to inject a bean for that? bean लगेगा क्या अपने को? uh, yes, you will need to inject a bean for that when you add the Spring Boot dependency which already added to your POM XML. Spring Boot automatically configures and registers several beans in the application. For a rate limiter, the standard industry practice is to inject the string Redis template bean. Why string template bean? Redis key value data for rate limiting is just plain text. Key says this, yeah, and values like token counts and timestamps. So is it a pre-configured version of Redis template that automatically serializes both keys and values as a simple string? Okay, समझा मेरे को ये apparently, which makes it extremely clean to read directly inside the Redis. Okay, so how to inject in your service? ये हमने किया है, ये हमने किया है, ये हमने किया है. So लेकिन बट कॉन्फ़िग तो गूगल ने अपने को सही आंसर दिया है ये. सो देन आफ्टर दैट वी नीड टू हैव अ ऑटो वायर्ड टेम्पलेट. Okay, so let me get this configuration. Okay, because this is a standard thing, so it is redis config. I need to create a class of redis config. There is a folder config. No, there is no folder, so let me add a package called config and let me add a new class over here, new java class redis config. ठीक है, and we will like paste this configuration. Okay, so import class, import class एक साथ नहीं करने देता क्या? import class redis cache, string serializer, import class and generic jackson to this is deprecated since version 4. ये भी प्रॉब्लम हम उसको ही पूछेंगे, तो हमें ये दे दे, आंसर दे दे भाई. कॉपी नहीं करने दे रहा, कॉपी नहीं करने दे रहा. स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम भी क्या नादान नहीं है. समथिंग इज डिप्रिकेटेड. यार मैं स्ट्रीम एंड कर रहा हूँ यार, मेरे को ऐसा घटिया रिस्पांस बिल्कुल भी नहीं चाहिए. दिस इज फकिंग हॉरिबल. I seriously don't deserve this, so I'll quickly end the stream instead of continuing on this. मेरे को इतना कमेंट करके पोस्ट पे डाल डाल के बोला कि do this project. Yesterday everybody gave the response and now I'm about to finish it and nobody is here. This is fucking horrible.
serialize generic serializer. It expect one object. मैं बंद कर रहा हूँ भाई स्ट्रीम, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए ये सब बकचोदी। मैं कर लूँगा अलग से फिर। नीड वन पैरामीटर, ये रेडिस के डॉक्यूमेंटेशन में होगा जो हमने जाके पढ़ा नहीं। सिस्को दे आर ट्रंक या मे बी। यस लिंट का एरर आ गया मुझे, अब बस गिट पर पुश करना है। ठीक है पुश करो, तो मैं तुम्हारा होने तक वेट करता हूँ बिकॉज तुमने स्ट्रीम को शुरुआत में बोला है। इट वुड बी रूड टू गो। Okay, Redis config is there, bin is injected. So what is this bin exactly is? mm, Configuration तो हम देते हैं config में, then bin reduce template string and object. String is our key and now the object that we need to pass, and then Redis template. uh, Template new Redis template dot set connection factory. CF, what is this? Redis connection factory that I'm not sure about. क्या है? Template set key serializer. New string Redis serializer. Okay, it is serializing our object, and template dot set value serializer. Then generic this object mapper. Okay, template this. Okay, okay, this is fine. And then back to our this, because we weren't able to add. So I think I need to do auto wired now. Auto wired. String redis configure redis template. redis template ही यूज करना है ना अपने को, क्या बोला है उसने? बहुत ही बोरिंग गाने लग रहे हैं मेरे को, कुछ अच्छा गाने लगा दो। ड्रैकुला। इट्स सेड redis template। ओके, ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा क्या अपने को यहाँ पे? मोहम्मद, ओके दिस इज इट आई गेस। ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करने का ऑप्शन नहीं है ना इसमें?
There is no formatter. It's okay. Let me try and running this. Is it working? There should be some error. Application started. It started bro. आज क्या चल रहा है? बिना एरर के एप्लीकेशन चल रहा है. Uh, कल. Hmm. Connection refused. If Redis cache set, if not present, set else. Uh, else get ये लॉजिक ही गड़बड़ है अपना. Let me ask the AGY. Can you give me the correct logic over here, because it's the last step is left, so we'll fucking do it instead of closing the stream, whatever be the stream. I'll share my portfolio for now. The typing site needs some fixes. It's okay bro, though there is a link of this typing site on my portfolio, please don't see it for now. Though there is a link of this typing site on my portfolio, please don't see it now. It does not have a result screen. Okay, okay, it's fine. Please do share, and you can't share the link over here, bro. In the YouTube chat, YouTube doesn't allow you to share the chat. It's not me, it's YouTube. You can either share it me on LinkedIn, you can share it with me on Discord if you are on Discord, और Instagram पे किया है तो Instagram, तीनों मेरे पास खुला हुआ है, मैं कहीं से भी देख सकता हूँ. Hmm, why he said what is he's saying. The state loss you are. I'm sharing on Discord. Okay. They say you are instantiating a brand new token bucket every request. This means it all always start. Yeah, yeah. This is wrong. This is wrong. This is wrong. ये बहुत ज़्यादा कर दिया इसने, इतने की ज़रूरत नहीं है अपने को. Can you keep it simple as my last concurrent hash map? Yeah, yeah, do share, bro. Do share. Discord is open. लॉजिक में गड़बड़ हुआ है अपना तो. Good girls die and can. The logic is updated. We have replaced the concurrent hash map with the Redis. I shared. Rahul Bish, hello, hello, Rahul Bish. Welcome to the stream. Don't mind my picture. It is. अरे it's okay, bro. Don't be that shy. मेरे को कौन से पेज पे नहीं जाना है? You said which page I should not visit. I'll share my profile. The typing site needs some fixes, though there is a link of this typing site uh, on my portfolio. Please don't see it for now. It does not have a. Okay.
This is you, Yash Mishra. On the front end, I work with React, TypeScript, and nice responsive interfaces. At the same time, I'm expanding into backend development, like learning Node.js, Express MongoDB, nice skills. Instead of always, uh, listing your skills directly, you can mention it in the way that what kind of problem you can solve. Like nobody is really interested in looking at the skill, what kind of problems that you have solved, and you can mention I have used this technology to solve this, or I have made this is more effective, but this looks nice. My works tackle a full stack student management system built for tutors, educational institutions to track test performance. Let me give this one command. So I compile the project and run the test. Everything builds clean. इसने अपना लॉजिक ही चेंज कर दिया यार, ये नहीं चाहिए था मेरे को ना। मैंने जो लॉजिक बनाया एक बार देखते उसको, पहले ये देखते। ट्री टाइप, hey I'm Spring Boot, hey I'm start Spring Boot, where I'm can to start it, bro you can directly, अगर तुमने I hope तुमने ये किया होगा। हेलो हेलो या अथर्व, थोड़ा लेट हो गया, इट्स ओके ब्रो। आज वैसे भी स्ट्रीम बहुत बोरिंग ही जा रहा था, मेरा काम भी हो गया है। सो आंसरिंग टू राहुल बेस्ट, भाई यू कैन स्टार्ट फ्रॉम, आई एम गेसिंग यू हैव डन बेसिक जावा एंड एडवांस जावा। अगर तुमने वो नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैट बिफोर स्टार्टिंग ऑन द स्प्रिंग बूट। अगर तुम्हें स्प्रिंग बूट पे डायरेक्टली स्टार्ट करना ही है तो आई सजेस्ट कोई एक डमी एपीआई बनाना, डायरेक्टली एपीआई बनाना स्टार्ट करो तुम। देर इज़ नो अदर बेटर वे देन डायरेक्ट हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, वैसे बनाना चालू करो। ट्राई वन डमी एपीआई बना के देखो विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, एंड उसके बाद देखो तुम्हें क्या पता है क्या नहीं पता, एंड देन यू कैन लर्न फ्रॉम यूट्यूब वीडियोस की एक एक सीरीज करके कुछ भी है, कोई भी सीरीज फॉलो कर लो जो तुम्हें सही लगेगा। मेरे पास ऐसे कोई बुक मार्क नहीं है, मैंने मेरे प्रोफेसर से कॉलेज में ही सीखा था। तो जस्ट एक 10 सेकंड स्ट्रीम बंद करके आया थोड़ा अर्ली। ओके ओके ओके, इट्स फाइन इट्स फाइन। डू लाइक द स्ट्रीम यार, आज एकदम ही डल स्ट्रीम चल रहा है, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया आज का। ट्री टाइप, कैन आई गो टू दिस प्रोजेक्ट? ट्री टाइप, my handwriting has always been a chaotic dance of ink, a sprawling landscape of rushed letters and tangled lines that often leaves even me guessing at my own thoughts on paper. What is this? मतलब मेरे को क्या करना है? टाइप करना है क्या? Is it like a typing thing? मेरा टाइपिंग तो बहुत ही बकवास है। इट्स टाइपिंग। अरे ये क्या हो गया? स्टक हो गया ये तो। इट गॉट स्टक। लेट मी रिफ्रेश इट। My handwriting has always been a chaotic dance of, अरे ये लैग कर रहा है यार, it is lagging bro, it's not taking, let it be, it's lagging. Space bar for changing word, अच्छा। Backspace for, it seems to be in React. I understood what's your problem. See, the message board closed before. Let me reset this. Okay, see, it's अंदर ही वो बहुत ज़्यादा रेंडर्स हो रहे हैं उसमें, ठीक है, इसके वजह से इट्स बीन, अगर मैं उसको
सही से लिखता जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर मैं कुछ गलती कर दूँ, फॉर एग्जांपल गलती किया, अभी ये स्टक हो गया, ठीक है, तुमने उसमें इंडेक्स की या कुछ ऐसे नहीं लगाए, तुम्हारे रिसोर्सेस ओपन है क्या? नो, इट्स अ बिल्ड। ठीक है, बिल्ड तो बनाया हुआ है तुमने। ठीक है ब्रो, दिस इज़ नाइस। ट्रैकल ये देख सकता हूँ क्या मैं? स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम build. It's a new version optimized. I used memoization memo. Okay. Key feature student management, easily organize and manage. हाँ, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हेल्पफुल है तुम्हें, मतलब एंड टू एंड प्रोजेक्ट समझ में आते हैं। इट इज़ नाइस। हुआ अच्छा बना है इसका। एंटर स्टूडेंट नेम पासवर्ड। ओके। ओके। डायनामिक वेब स्क्रैपर, बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन वेब स्क्रैपर। इसको मैं टेस्ट नहीं कर पाऊंगा, इसको मैं देख सकता हूँ। गाइस प्लीज़, जो भी नया आ रहा है प्लीज़ डू लाइक द स्ट्रीम यार। आज का स्ट्रीम तुम लोगों ने बहुत ही दिमाग ख़राब कर दिया। मैंने इवन दो आई हैव completed this part। अभी एक एरर आया मेरे को जब हम रेडिस कैशे कर रहे थे, अब मैं वो सॉल्व करता हूँ। ये क्या है? वेदर ऐप। ओके, सर्च सिटी। लेट मी सर्च पुणे। ओके, पुणे। हाउ मच? 20, 28, 29? या, लेट मी सर्च माय सिटी, नांदेड़। Yeah, Nanded is also raining. Oh, you are showing rain. Yeah, Nanded में rain हो रहा है. And let me see the Mumbai because I know the weather of Mumbai right now. Yeah, Mumbai is cloudy. पुणे के लिए ये एनिमेशन क्यों नहीं है? ये एनिमेशन मस्त है ऊपर वाला. This is nice. This is nice. Cool, cool. बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया। बढ़िया है तुम्हारा काम। ये क्या? ब्रांड वेब डेवलपर इंटर्न। अच्छा, ये तुम्हारा एक्सपीरियंस है। लेट्स वर्क टुगेदर, लेट्स टॉक। कैन आई स्टॉक यू ऑन इंस्टाग्राम? दिस इज यू। बुक्स, टेक, ड्राइंग, पोएट्री। नाइस नाइस। Uh, Trackle's backend is hosted on render. It takes a lot of time to open it for the first time if not opted for few days. Yeah, yeah, it sleeps. वो sleep वाला लॉजिक होता है, पता है इन सब चीज़ों में there is sleep logic applied कि अगर तुम यूज़ नहीं कर रहे हो तो वो sleep में चले जाता है। तुम्हें जगाना पड़ता है उसको हिला के, फिर वो जगेगा, फिर उसके बाद के रिक्वेस्ट फंस जाएंगे। सी माई स्टोरी। अच्छा, मैंने बंद कर दिया, एक सेकेंड। लेट मी सी योर स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम। कुछ project update added a result layout, also fetched the paragraphs from server, not hard coded. Yeah, nice. A few more functionalities and I am done. This is nice. मैं कौन से अकाउंट से लॉगिन हूँ यहाँ पे? ओके, करेक्ट अकाउंट से। डे एंड नाइट साइकिल। नाइस। यू आर अ क्रिएटिव पर्सन, दैट मीन्स मतलब तुम्हें चुन ले कुछ ना कुछ करने की। ड्राइंग वगैरह लिखते भी हो। फ्रेंड फंक्शन, एक बहुत ही अच्छा हैंड राइटिंग है तुम्हारा। A friend function is a function that is not a member of the class but can access its private and protected members. That's nice. GG, bro.
This is nice. I'm not gonna. अच्छा contact मेरे को लगा मोबाइल ही है. Made with love by यश मिश्रा. Nice brother. Let me give you the points to sharing this, Yash Mishra, and let me give you for sharing the lovely portfolio with us. It is still at the top. Okay, let me run this again. Stop and rerun. Cannot find Ionity resolver DNS. It started, but it cannot find this. So clear, and let's try this now. There is some error. या ये कुछ तो गड़बड़ है इसका, या अब ये मेरे दिमाग के बाहर है, क्योंकि ये मैंने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया. मैं अभी एआई से बोलता हूँ इसको करने के लिए, लेकिन बाद में मैं इसको फिक्स करूँगा ऑफ द स्ट्रीम, बिकॉज राइट नाउ आई जस्ट वांट टू पुश द कोड. मैंने कॉन्करेंट हैश मैप वाला किया, रेडिस वाला नहीं किया. यूज़ होम व्यू using docker. You have, if you have docker installed and running, you can start redis. हाँ. यार, सबसे बेसिक मिस्टेक जो है, डॉकर ऐप अपने पास है और डॉकर का कंटेनर चालू करना पड़ेगा अपने को, विच इज़ नॉट स्टार्टेड. सो या अलाउ. ये देखो मैकबुक में फालतू की सिक्योरिटी है, मतलब मैं ऐप ओपन कर रहा हूँ तो अलाउ ही करना है ना उसको. न्यू, अब ये काम करेगा. हाँ, मेरे को फिर से रीबिल्ड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा. या इट वर्कड. लेट्स टेस्ट. 429 आया, यस 429 आया, एंड इट्स वर्किंग. यही गोल था अपना. See the story till dude went on doing the things I was hoping he wouldn't. How hilarious. uh, Dude, wait for the result screen. I told you not to open my typing. Oh अच्छा, तुमने टाइपिंग साइट ही बोला था. मैंने ओ सॉरी सॉरी सॉरी. मैं सोचा मैं क्या ओपन नहीं करना है और वही ओपन किया. बट इट्स नाइस ना, अच्छा है वो. मल्टी टैलेंट, यस यस, रियली मल्टी टैलेंट. यश मिश्रा तो इज लाइक रियली Charizard, you know, if you know the reference of Charizard, third evolution. See the story till the end. You missed it. Oh अच्छा, did I miss it? ठीक है, मैं देखता हूँ, मोबाइल पे देखता हूँ. स्टोरीज मोबाइल पे देखने में ज़्यादा मज़ा आता है. आज स्ट्रीम थोड़ी लंबी हुई, बट कुछ चीज़ें बच गई जो बतानी थी. हाँ हाँ, प्लीज़ बताओ. इट हैपन्स यश भाई, इट हैपन्स. या सॉरी यश, मैं देखता हूँ. आई मैं फ़ोन से देखूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट. सो इट वर्क. सो इसका मेरे को पुश करना पड़ेगा ये कोड भी. मच्छर की माँ की आँख भैंचो. रेट लिमिट चेक. स्ट्रिंग तो यही था अपना. स्ट्रिंग इसने थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया. स्ट्रिंग रॉ वैल्यू रेडिस टेम्पलेट ऑफ गेट की, अगर इफ देर इज समथिंग, and token bucket, non-initialized bucket has been created. If raw value is null, that means if it doesn't exist, then we need to create new bucket. Okay, and else string raw value, matlab if it exists, split and store the token bucket. Raw value split, double tokens, pass double tokens, long last refill, and then bucket this new token. Okay, and boolean allowed bucket dot try consume, yes. String update value this. Okay, understood. And अच्छा, ये ज़्यादा चेंज नहीं है, ये तो मैं समझ गया भाई. फिर तो I can give it a full stop today for then, because I understood how it's working, and this is the only file that is being changed. One version file in memory. Yeah. Implemented the
Redis cache uh, in place of the in memory concurrent hash map. ठीक है. ज़्यादा यूआई नहीं है, मैंने देखा है लास्ट टाइम जब मैंने कुछ यूआई वाला बनाया था तो वो तुम लोगों को ज़्यादा अच्छा लगा था क्योंकि उसमें यू गाइस कैन सी ऑल द थिंग्स, बट इसमें नहीं. तो git push pass key is like pass key, and yeah, this is done. So this is done. I'll create a documentation and उसमें मस्त लगा के रखेंगे. और उसमें अल्गोरिदम्स भी अलग अलग, तो वो अल्गोरिदम्स भी चेक करने पड़ेंगे. तो हमने टोकन बकेट इम्प्लीमेंट किया है एक्चुअली. देर इज़ वन मोर अल्गोरिदम विच इज़ लीकिंग बकेट फिक्स्ड विंडो. स्लाइडिंग विंडो इज़ हेल्पफुल व्हेन द टाइम टाइम जब दिन का टाइम चेंज होता है ना, रात को 12 बजे, उसके बाद उसका हम यूज़ कर सकते हैं. तो स्लाइडिंग विंडो काउंटर. तो मेरे को ये चारों 6 एल्गोरिदम है, तो 6 के 6 एल्गोरिदम बना के एक बार करके देखना पड़ेगा. तो आई कम प्रिपेयर्ड फॉर. आई डोंट थिंक टुमारो वी विल स्ट्रीम बिकॉज फ्राइडे को मैंने देखा है दैट इज जीरो रिस्पॉन्स. सो आई बेटर आई नॉट स्ट्रीम ऑन सैटरडे नाइट. आई श्योरली स्ट्रीम एंड इसको हम अच्छे से करेंगे. और यूआरएल शॉर्टनेट कोई भी प्रोजेक्ट में हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके लिए भी मैं एक तरीका बनाता हूँ, मे बी a YML file, so that a process by using that we can use this API gateway for other applications that I have. So I'll do a local to local setup and create a testing environment, and then in that we can do that. But for that the main goal of this is to have to know all about all these algorithms, because अगर इंटरव्यू में interviewer ask us कि which kind of algorithm, which algorithm you will use for rate limiting, then I should be able to say all these algorithms like token bucket, leaking bucket. Token bucket just we implemented, leaking bucket, fixed window counter, and sliding window, all this. So I should be able to explain this just like this. So this is the token bucket algorithm we did, and on the next stream we will do the rest. So let me get back to the messages. Dude went on doing things. Yeah, I was, yeah. Sorry. आज स्ट्रीम थोड़ी लंबी हुई है, मैंने पढ़ा. इट हैपन्स. अरे एक बंदा आ गया था, वो ले गया 30 मिनट, उसके बीच में भूल गया कम्युनिकेशन रिलेटेड चीज़ें. अच्छा, होता है, हैपन्स हैपन्स. बट द स्ट्रीम वेंट गुड. एक्सप्लोर्ड न्यू data container sets. That's nice. In short, revisited 3, one new problem, 2 approaches, approx 4 hours. That is great. You're going good, bro. GG. GG, GG. Nice. ठीक है guys, this was the rate limiter and the remaining algorithm. So I'll go and do on the next stream. मैं बीच में थोड़ा कर लूँगा क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम होगा सैटरडे मॉर्निंग में. So I'll do that and I'll be ready so that I'll be able to explain to you guys. If you guys really want me to do this project, take it to the finish line, then do like the stream so that I'll know ki yes, people are interested. Else doing this off stream wouldn't take that much of a time for me, because I can do these things quickly focused mind से. बस मैं उसके लिए कर रहा हूँ. भैया बट ये प्रोजेक्ट्स ऊप्स वाले हैं, मीन्स रेज्यूमे में नहीं डाल सकते ना? नहीं नहीं नहीं, ये रेज्यूमे में डालने के लिए नहीं है. वी आर प्रैक्टिसिंग सिस्टम डिज़ाइन क्वेश्चंस ब्रो. देखो, मेरा गोल था जावा पढ़ने का, स्प्रिंग बूट प्रैक्टिस करने का, और सिस्टम डिज़ाइन सीखने का. सो दिस काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट डूइंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स ना, इसमें मैं स्प्रिंग बूट का प्रैक्टिस भी हो रहा है. फॉर एग्जांपल दिस कॉन्फ़िगरेशन. सो आई नो कि देयर इज़ अ कॉन्फ़िगरेशन, बीन बनाना पड़ता है, ये सब चीज़ें, हाउ टू इंजेक्ट. ये एक टेस्ट कंट्रोलर, मतलब टेस्ट कंट्रोलर बनाया हुआ है, और ऑल दिस थिंग्स, डीटीओ वगैरह. तो आई एम प्रैक्टिसिंग जावा. In short, I'm practicing Spring Boot, and also I'm learning the system design with the help of a book. So it is all the things combined. Just not कि ये resume वाला project है, ये resume वाला project नहीं है, practice वाले project है छोटे छोटे. So it will give me, but ये छोटे projects का impact बहुत ज़्यादा है. If you see, तुम्हें अगर कभी इंटरव्यू में पूछा होगा, the last URL shortener that we did, I am now able to explain. अरे मेरा स्क्रीन स्टक है क्या?
Okay, screen is not stuck. Interview में I can easily explain that URL shortener ना, URL shortener we did in very depth और 2 या 3 दिन में हमने पूरा कर लिया, तो that is good. तो उसके लिए कोई प्रोजेक्ट्स प्लान्ड है? हाँ हाँ, उसके लिए मैं एक प्रोजेक्ट प्लान कर रहा हूँ। बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि मेरे को खुद को चाहिए। एक एप्लीकेशन, एक ऐप बनाऊंगा मैं रिएक्ट नेटिव और स्प्रिंग बूट में, विच इज़ द ऑर्डर्स ऐप। मैंने एक स्ट्रीम पे एक्सप्लेन किया था, तो आई विल नॉट एक्सप्लेन दैट अगेन। इट्स जस्ट सिंपल कि आई वांट टू ट्रैक ऑल द ऑर्डर्स जो मेरे फ़ोन पे आ रहे हैं अलग अलग ईमेल पे, बिकॉज मेरे को इंस्टाग्राम शॉपिंग की आदत है, मेरे को याद नहीं रहता कौन से साइट से ऑर्डर किया है, क्या किया है। तो वो सब एक जगह पे आया, उसका ओटीपी आया और मेरे को बताए कि मैं घर के बाहर जाने वाला, मेरे को बताया कि भाई तेरा ये ऑर्डर आने वाला है आज, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट, यू नो। तो ये मेरे लिए मैं बनाऊंगा ऐप, वो मेरा मेन प्रोजेक्ट ऑर्डर्स ऐप। ओके, सो ट्यून इन फॉर दैट थिंग, वो भी बनाएंगे एक बार। अपने को पूरा अभी स्प्रिंग बूट का ये कितना कौन सा प्रोजेक्ट है अपना, पहला हमने JWT ऑथेंटिकेशन बनाया, सेकंड हमने यूआरएल शॉर्टनर बनाया ऑन स्ट्रीम, और ये थर्ड रेट लिमिटर हम बना रहे हैं। और उसके बीच में मैंने थोड़े पे एक पेमेंट सिस्टम बनाया था, सिंपल सा पेमेंट, मतलब यूपीआई को ये करने वाला। इट्स अगेन अ प्रैक्टिस प्रोजेक्ट जस्ट फॉर सम कंसेप्ट्स, वो किया था। और एक दो प्रोजेक्ट किए थे, तो ऑलमोस्ट 5 प्रोजेक्ट मैंने किए हैं लास्ट एक मंथ में, which is just a practice project. It is not a final production based project, but it can be because I'm writing the code in such a way that I should be able to do in the final project, you know. So do like the stream if you guys want to see and do such kind of thing. मैं इन सब streams में से एक videos भी बना के डालूंगा, uh, that could be like 5 minute review of what I did, how I did, and what output, ये सब मैं quickly दिखाऊंगा, so that you don't have to see this 3-3 घंटे का stream. It is not feasible कि 3 घंटे का कोई स्ट्रीम आके देखे। अगर तुमने ज्वाइन किया तो ठीक है, तब तक मैं जब भी तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा तो आई डू एक्सप्लेन। मेरे दोस्त का अभी जेप्टो में इंटरव्यू था SD1 का, उससे भी बुक माई शो टाइप का LLD बनवाया था। हाँ, मैंने बुक माई शो का भी एक LLD किया था। LLD वो बहुत ही पॉपुलर, यू नो दिस पॉपुलर क्वेश्चन यू शुड डू। बुक माई शो का मैंने मेरे इस पे किया है, इफ़ आई कैन शो यू माई गिटहब, मेरे गिटहब पे है, अभी मैंने किया था बुक माई शो का। अह, कहाँ रखा था मैंने उसको, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हो गए मेरे इसमें अभी। ठीक है, वो किया है मैंने। यही सब पूछते हैं देखो, अभी पॉपुलर जो चल रहा है वो यही है कि बुक माई शो, तुमने करेक्ट पकड़ा है। LLD में बहुत सारे, LLD में तुम्हें पे फ्लो भी पूछेंगे, UPI वाला, वो भी एक पॉपुलर क्वेश्चन है। व्हाट थिंग्स डिड यू यूज़ फॉर URL शॉर्टनर? URL शॉर्टनर के लिए मैंने स्प्रिंग बूट यूज़ किया, रेडिस कैशे यूज़ किया, और फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट यूज़ किया। मेरे इस पे गिटअप पे है, वो अभी आपको रन करके दिखाना है तो वो टाइम लगेगा उस पर, क्योंकि मैंने डॉकर वगैरह भी है उसमें। यही है URL शॉर्टनर प्रोजेक्ट, ज़्यादा API नहीं है इसमें। URL शॉर्टनर, सी दिस इज़ अ वेरी सिंपल कंट्रोलर, सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट कंट्रोलर दैट कैन बी पॉसिबल। इट इज़ जस्ट वन API की शॉर्ट एन API, जो पोस्ट कॉल करके शॉर्ट एन API बना के दे, और हमने अगर कोड दिया है तो उसके ऊपर अपने को रिडायरेक्ट करके दे। सो देर इज़ वन 40, क्या बोलते हैं उसको, 20, क्या कोड था यार इसका, 20 रिडायरेक्ट कोड क्या थे, मैं रिडायरेक्ट कोड भूल गया क्या। रिडायरेक्शंस API स्टेटस कोड 301, 301 and 302, so we use 302, so permanently moved. uh, what things did you, I explained what things I used. आज नई चीज़ पता चली, बंदा था बोल रहा था डेटा एनालिटिक्स विल वाली चीज़ों में भी DSA पूछ रहे हैं। हाँ, आजकल पूछ रहे हैं सब कुछ, चूस ले रहे हैं तुम्हें इंटरव्यू में।
हाँ ब्रो, डीए रोल पे भी बेसिक डीए से पूछ रहे हैं अब। यस, कंपटीशन बराबर करने के लिए कर रहे लगता है गुड पीपल। हो सकता है, मे बी। ठीक है गाइस, चलो चलते हैं। आज के लिए कर लिया हमने। आज का स्ट्रीम तुम लोगों ने बहुत ही मूड ऑफ कर दिया मेरा, किसी ने लाइक नहीं किया स्ट्रीम, कुछ नहीं किया, मेरे को अच्छा नहीं लगा। सो आई go and reevaluate on things ki what thing that you guys want and what thing I want and where can be a Venn diagram intersection be made on these things. uh, चलो चलो, बाय बाय गाइस, गुड नाइट, सी यू सून। किसी को कुछ लास्ट पूछना है तो डू आस्क, आई एम एंडिंग द स्ट्रीम। कंपटीशन बराबर करने के लिए कर रहे लगता है गुड पीपल, ये पढ़ा मैंने। चलिए भैया, गुड नाइट। यस, गुड नाइट, गुड नाइट। एंड डू जॉइन ऑन सैटरडे। सैटरडे में हम थोड़ा लंबा स्ट्रीम करेंगे। कल डिस्कॉर्ड पे मेरा मेरा लेवल किसी ने बढ़ा दिया था क्या? तुमने मैसेज किया तो अपने आप बढ़ता है। देयर आर इंटीग्रेशंस दैट आई हैव एडेड टू दैट डिस्कॉर्ड सर्वर। मे moonlight offer you slumber peaceful solace. That's really nice. Thank you, Yash. Thank you all for joining in, tuning in, and especially Yash because he stayed since the beginning to the end and ending on such a good note. So thank you all. I'll create a good videos on this. I'll post the videos. Hope you guys will like that. URL shortener का मैं अभी बना रहा हूँ. It will be done like in next 2-3 days because the editing बहुत दिनों बाद मैं कर रहा हूँ तो इस पे टाइम लग रहा है. ठीक है, चलो बाय बाय। जिसने लाइक नहीं किया कर दो यार, इतना भी नहीं भाव खाना चाहिए किसी ने, बहन जो लाइक नहीं कर रहे हो। चलो बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।